Hello and welcome to my channel everyone. So if you are new here, my name is Chumki and मैं एक पैरामेडिकल का स्टूडेंट हूँ. मेरा 6 months का इंटर्नशिप था जिसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेकर मुझे अपना कॉलेज जाना था, that is Assam Downtown University. So I'm traveling at the time of 4:30 AM in the morning. Me and my friend, we were heading towards the railway station and I'm gonna show you the journey and also what I eat in a day in the train. So हम लोग ने थर्ड एसी टायर में बुक किया था and this is the compartment as you can see. So सब लोग अपना वीडियो में फिट चेक देते हैं तो मैंने भी सोचा मैं भी फिट चेक ही दे देती हूँ. This is the hoodie and jersey of 2 years old. We have to wear something comfortable in the train, so मैंने ये चूज़ किया आउटफिट. And वैसे भी त्रिपुरा to Guwahati is like 525 किलोमीटर and it is like 12 hours journey. तो हम लोग को comfortable ड्रेस ही पहनना चाहिए. So हम लोग ने हम सफ़र ट्रेन में बुकिंग किया था क्योंकि जितना टाइम दिखाता है पहुंचने का उससे पहले ये पहुंच जाता है. Surprisingly it was a washroom and it was quite clean, better than the Kanchenjunga. So in the morning we had this cake and then later on I was feeling dizzy, so this is the dry jujubes that my friend bought. And I was very glad because she brought something which is very sour, and when you feel dizzy or feel like vomiting, one should eat sour things. So it was 1 or 2 PM and lunch के टाइम पे मैंने ये ऑर्डर दिया था चिकन बिरयानी. So I was not expecting anything and here I was smelling that whether it is spoiled or not. लेकिन taste wise it was quite good. And मेरा दोस्त ने उसका टिफिन ऑलरेडी पैक करके लेकर आई थी अपना रूम से. एंड इन द आफ्टरनून ये चिप्स बेचने आए थे तो हम लोग ने सोचा खरीद लेते हैं. मैंने ये 2 चिप्स खरीदा. सो मी एंड माई फ्रेंड वी हैड दिस एज अ आफ्टरनून स्नैक. So यहाँ हाफलोंग स्टेशन में रुका था एंड देन आई हैड दिस फ्रूट सैलड एंड मैं भूल ही गई थी रिकॉर्ड करने के लिए सिंस आई वाज सो इन हरी क्योंकि ट्रेन यहाँ पर बस 6 to 7 मिनट्स ही रुकता है. So it was evening already, 5 PM था एंड हम लोग ने सोचा थोड़ा चाय पी लेते हैं. एंड साइड में हम लोग ने भैया को भी बोला था कि कप नूडल्स में थोड़ा पानी गर्म करके देने के लिए. So finally हम लोग गुवाहाटी रेलवे स्टेशन में पहुंच गए and it was around 7 PM in the evening and then we booked an Uber from here. And yeah, this is the end of the video guys. If you have watched till the end, I'm very grateful. So see you in my next video. Bye. I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Up पर भी करना. Oh.